लॉन्च किया है इन एसोसिएशन विद केंद्रीय विद्यालय संगठन जम्मू एंड कश्मीर। हम लोग ऑलरेडी ये प्रोग्राम बेटा सक्सेसफुली लॉन्च कर चुके हैं केंद्रीय विद्यालय ले में, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 400 स्टूडेंट्स ने इसका एक प्रोग्राम सेशन अच्छा एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था। अब ये प्रोग्राम क्या है, मैं थोड़ा सा क्रैक्स आपको बता रहा हूँ, प्लीज पे अटेंशन, क्योंकि कल से ये प्रोग्राम हम लोग कलेक्टिवली करेंगे विद योर रिस्पेक्टिव कॉन्फ्रेंस रूम या जो भी ऑडियंस हैं आपके, ठीक है। आज सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी टॉक दे रहे हैं हम लोग। इट्स अ प्रोग्राम बेस्ड ऑन मेडिटेशन। समझ आता है सब लोग को? मेडिटेशन क्या होता है? ध्यान। कभी किया किसी बच्चे ने? कितने लोगों ने मेडिटेशन किया इससे पहले? ओनली रेज देयर हैंड्स। दैट्स इट। कभी मेडिटेशन नहीं किया मतलब बहुत सिलेक्टिव लोग हैं हमारे पास। हम लोग बेटा यहां आपको मेडिटेशन सिखाएंगे जो एक साइंटिफिकली प्रूवन प्रोग्राम है। द प्रोग्राम नेम इज CBE, कॉन्शियसनेस बेस्ड एजुकेशन। अब आप लोग बच्चे कहेंगे मेडिटेशन का हमारे लिए क्या बेनिफिट है? आता है ना माइंड में? यस और नो? कितने लोगों ने ये जज किया है? हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर हैविंग कि किसी बच्चे के अप्रोक्सीमेटली 70% नंबर आ रहे हैं, किसी के 80s आ रहे हैं, किसी के 50s आ रहे हैं, कोई 40 स्कोर कर रहा है। व्हाट इज रीजन बिहाइंड? रीजन क्या होता है, कोई बता सकता है मुझे? पीछे से मुझे आवाज आ रही है, कंसंट्रेशन। और इसके अलावा नहीं, डेफिनेटली मेडिटेशन से तो हम लोग कर ही सकते हैं। और क्या रीजन होता है व्हाई वी बी नॉट स्कोरिंग द सेम? हार्ड वर्क, देन मेंटल एबिलिटी, वेरी गुड। और बोलो कॉन्फिडेंस, बोलो कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस। और वन टॉप मोस्ट थिंग इज दैट IQ। व्हाट इज इट? IQ। आप लोगों को, कितने लोगों को पता है कि हमारा ब्रेन जो वर्किंग करता है कितना परसेंट करता है? एल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम सुना हो सब लोगों ने? डिड यू नो एल्बर्ट आइंस्टाइन का ब्रेन कितना काम करता था? कितना? एग्जैक्टली ओनली 10%। ओनली 10%। एल्बर्ट आइंस्टाइन का ब्रेन 10% काम करता, तो हमारा जो करता है इट्स अप्रोक्सीमेटली 5%। 5%। इफ यू थिंक अबाउट इट कि अगर वो 5% 6, 7, 8, 9% में कन्वर्ट हो जाए तो व्हाट काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट्स वी कैन डू इट। बेटा ध्यान से मेरी बात समझ आ रही है लास्ट रो तक? अगर हमारा माइंड, हमारा IQ it touch with 7 to 8%, did you know कि what is the kind of output will be coming on that? We all are scoring very very high numbers and results has been going into very touch screen। इसी प्रोग्राम के कंटिन्यूशन में हमारे पास एक प्रोग्राम है जिसमें हम लोग थ्रू ECG, समझ आता है सबको ECG क्या होता है? क्या करते हैं हम लोग ECG के थ्रू? ECG के थ्रू हम लोग हार्ट टैकिंग करते हैं कि हार्ट कितना वर्किंग कर रहा है, पंप अप कितना कर रहा है। ऐसे ही सिमिलरली वी हैव अ EEG मशीन। हमारे पास EEG मशीन है, कोहेरेंस मशीन, जिसके थ्रू हम लोग आपका स्ट्रेस लेवल जज करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अभी जो बच्चा बैठा है या कोई भी टीचर बैठा है उसका प्रेजेंट स्ट्रेस लेवल 70% है। आफ्टर डूइंग दिस मेडिटेशन सेशन फॉर 10 days, 15 days और मंथ, their stress level is going decrease 30 to 40%। तो दिस इज अ इफेक्ट ऑफ दिस मेडिटेशन। तो कल से हम लोग जिस चीज को कंटिन्यू कर रहे हैं उसके लिए वी हैव अ काइंड ऑफ ट्रेनर्स विद अस। वन इज डैनी एंड जैसन। तो आई कैन कॉल जैसन। जैसन प्लीज कम। ही कैन गिव यू द बिट काइंड ऑफ एलैबोरेशन ऑफ द प्रोग्राम एंड सिमिलरली आई कैन ट्रांसलेट यू। Good morning, class. So, Vishal talked about the benefits of CBE. I'm going to tell you how it works. First, we sit comfortably in a chair and we close our eyes. Hello. Then we begin a simple, natural, effortless procedure that allows the conscious mind to settle down and experience more refined, more charming levels of thought. Understand? बेटा are you able to understand the things? Like क्या प्रोग्राम है, सबको समझ आ रहा है? Only raise their hands or do you need a translation? You need a translation? Fine, good. At the same time, the body settles down.
and gains a profoundly deep state of rest that's 2 to 3 times deeper than any point during our sleep. In every 10-15 minute sitting, the mind transcends the thinking process. That means it goes beyond even the finest impulse of thought. And we experience what we call the source of thought, or our deepest value of inner silence. And this experience is so indescribably enjoyable and satisfying that naturally the mind becomes infused, bringing it back out into the daily activities of our lives, giving us a better quality of life all the way around. This technique is popular throughout the whole world. It requires no concentration, no change in lifestyle other than adding a few minutes twice a day. It feels good and it works. Now I'm going to let Danny talk about the other benefits. बेटा इस प्रोग्राम का बेनिफिट क्या है? ये एफर्टलेस प्रोग्राम है और ऑल ओवर सबसे बड़ी चीज है रिसर्च समझ आता है. इस प्रोग्राम की 800 रिसर्च हो चुकी हैं ऑल अक्रॉस वर्ल्ड में. ठीक है, 200 प्लस यूनिवर्सिटीज में सक्सेसफुली इंप्लीमेंटेड है. केवीज में हम लोग इसे ग्रेजुअली हर एरिया में इंप्लीमेंट कर रहे हैं. कई आईटीआईज, गवर्नमेंट आईटीआईज, कई पॉलिटेक्निक्स, कई यूनिवर्सिटी स्कूल्स में ये प्रोग्राम चल रहा है. ठीक है, तो प्लीज पार्टिसिपेट करिए एक्टिविटी. और इसमें कहीं पे भी कुछ समझ नहीं आ रहा, प्लीज लेट अस नो. Good morning. Now, Jason talked about a sense of deep rest that's deeper than the rest we get at night. Why is that important? We've all been to the doctor at least once, especially if we're sick. If we go to the doctor because we're sick, obviously he's going to prescribe medicine, tell you to drink more water, do this, do that. The main thing he's always going to tell you is to get more rest. This thing is scientifically validated to give you deeper rest, which actually heals the physiology of the body, or the physical body. The main thing that we really aspire to with this technique, healing, is stress release, or stress relief. We all have experiences in life that stress us out, that make us nervous, get angry, get depressed. Everybody goes through it. Sometimes these experiences really affect you in a long-term way. It knots your nervous system up, knots your physiology up, and it prevents you from being able to perceive things clearly on the outside. If you have a really stressed out life, you can't function clearly. It affects your creativity, your memory, the way you socialize, the way you do things in life, the way you function around people, the way you function in school. You all have classwork, you all have homework. If you're really stressed out, it really does have a big partake in this. This technique helps relieve those stresses so you can be clearer, more happier, more functional. The number one killer of people, especially in the West, is stress. Either from making bad mistakes or health issues, heart attack, cardiovascular issues. If you constantly have a stressed out life, you constantly don't have a way to relieve yourself from these stresses, it's going to affect you in the long term. We all want to be happier. We all want to be more functional in life. I'm sure some of y'all have goals in life to do things long-term wise. This technique helps you achieve that. I promise, I've been practicing this technique for 10 years. It's so simple, so effortless, that all it requires you to sit and be comfortable. You don't even have to believe in this thing because it's very systematic. It uses the natural tendency of the mind, which is to experience more happiness, more gratification, which is inside of us. All we need is an angle to get us down there. And we don't force this thing. And I've seen this over and over work with many, many people from around the world. Especially in India over the last month, I've taught a lot of students. There's over 20 million people that have practiced this consciousness-based education technique. From many cultures, many religions, many backgrounds, many identities, so it works. And you can still be yourself. And we just practice it twice a day for a few minutes. And the more and more you practice it, that's the most important aspect, is consistency. You have to practice this thing twice a day to gain the benefits. And the benefits continuously grow. You feel better.
more enjoyment in life, more energy. What comes along with deep rest? We get a really good night of sleep. How do we feel in the morning? Really good, right? Because we really get a lot of good rest from that night of sleep. Like this, very simple, very short period of our life. And then we go do it, whatever it is we do throughout the day. So it's no force. There's tons and tons of research on this that go back for the last 50 years. And over 20 million people have practiced this technique. And the research shows consistently all the time, every time we do research on people. I'm going to talk about the basics. Jason's going to talk about a little bit about the basics, the mechanics. C.B.E. improves coordination. All right, so how this technique works, how consciousness-based education works, is we're using the natural tendency of the mind, like Danny said. What do you think the natural tendency of the mind is, right? Is it to wander? No, right? No. It's to seek greater happiness. Okay? So when you practice this technique, it's charming the mind to greater happiness. How many of you have ever stopped thinking? Right? Absolutely nobody, right? Thoughts keep coming. There's a source that is infinite inside of us. Okay? This source is creative, it's intelligent, and it has energy. That's where our thoughts come, right? Our thoughts are creative, they're intelligent, and they take energy, right? And they just keep coming. So when we go beyond thought, we're transcending that experience and having the experience of pure consciousness. That's what consciousness-based education is about. So when we're using the natural tendency of the mind, right, it's a very effortless process. Have you ever done any hard homework that you didn't like? Yeah? Yeah. How hard was it to stay focused on that homework? Not so easy, right? But if your favorite song played at that same time, you're able to listen to it very easily, right? You don't have to think about it. You're listening to it, right? Good. This is how this technique works. We're using the natural tendency of the mind to go inward. And how we do that is with a sound. And these sounds aren't something that we made up. They're sounds that have been passed down from generation to generation, from teacher to student, through the long corridor of time. So, we're using this sound that charms the mind to go deeper within ourselves. And these sounds, we know they work because they've been passed down in their purity for a long time. And because we have the research that shows that they work. So there's sounds which effects are known. And everybody gets a different sound. It's almost like shoe size or blood type. Whatever sound is yours is the one that's correct for you. Any questions? No? Okay. So, we have some forms to fill out for tomorrow that you give back to us, and then we give you your sound. But there is a ceremony that we do for ourselves as starting the program. Okay? All right. So look, when we go through this instruction tomorrow, okay, we're going to be broken up in groups, okay? We're going to each give one of you a single form. It's got some questions on there with some of your information. Now, you're going to keep this form permanently. We're not taking it away from you, but we got to have some information to make sure that we instruct you in this technique properly, okay? So when you get divided up, you'll each get a form. We're going to go through the quick ceremony. The ceremony is just basically a ceremony of gratitude from teacher to teacher. It's also insurance to make sure we actually instruct the technique properly. So that's it. It's from teacher to teacher. After that, we will call each one of you individually, one by one, and we'll take you to the back of the classroom, give you your sound, tell you to go back to your seat, and you'll mentally repeat it until everybody's done. After that, we'll go through the systematic instruction. Now, don't make that move.
Don't make too much out of this. It's very simple. When we get through the whole instructions, you'll feel a lot better, more relief, more happiness. You'll feel more settled down, more clear. We promise. I've seen it over and over again, especially with a lot of kids, especially in India, a lot of the students we've taught. So if you have any questions, do not be afraid to ask. Michelle, do you have anything? टेल मी वन थिंग बच्चों, आप लोग को अभी तक जो हमने एलैबोरेशन दी है वो समझ आया? यस और नो? फाइन. तो व्हाट इज द प्रोग्राम नेम इज? सॉरी, थोड़ा जोर से. या इट्स CBE, कॉन्शियसनेस बेस्ड एजुकेशन. इट्स CBE, कॉन्शियसनेस बेस्ड एजुकेशन. कल हम लोग एक प्रोसेस करेंगे, लाइक दे विल बी डूइंग यू द वन वर्ड टू सेटल योर थिंग्स, लाइक माइंड को रिलैक्स करने के लिए. और जैसे आपको बताया गया, इट्स वेरी वेरी इजी, वेरी एफर्टलेस, वेरी कंफर्ट टेक्निक. सबसे बड़ा बेस्ट पार्ट क्या है? कल से आपको धूप में नहीं बैठना पड़ेगा, ठीक है? एंड सेकेंड I'm looking for some more clapping. Second more thing is that कल से आपको योगा मैट्स पे नहीं बैठना पड़ेगा. तो ये मेडिटेशन हम लोग जो कराएंगे ये चेयर्स पे होगा. तो hope you young kids are understand. It's a very very advanced, scientifically proven. आपको जमीन पे नहीं बैठना है, चेयर्स पे कंफर्टेबली बैठना है बेटा, ठीक है? हैप्पी? So I guess मतलब by tomorrow onward we'll be looking for your 100% strength. Because of that, this program is going to cover up into the maybe Saturday or Friday. Friday we have a lot of doubts, जो भी आपके doubts होंगे. अभी तक regarding this conversation or introduction, किसी बच्चे का कोई question है? Any question relate to any this program कि meditation ये क्या है, क्यों कर रहे हैं हम लोग, कितने टाइम पीरियड का होगा, इससे हमें क्या बेनिफिट होगा? एनीथिंग इन योर माइंड? यूज माइक. सर इससे क्या बेनिफिट होगा? एक बहुत अच्छा क्वेश्चन. क्या नाम है बेटा आपका? सर जाह्नवी. जाह्नवी का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि इससे, और कौन सी क्लास में हो? सर 9th स्टैंडर्ड में. जाह्नवी का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे हमारा क्या बेनिफिट होगा? जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि क्यों हमें इतनी देर बिठाया जाएगा, क्यों हमें मेडिटेशन सिखाया जाएगा. इसका एक कलेक्टिवली आंसर मैंने एक दिया था बेटा. अगर आप कोई भी प्रोग्राम, मेडिटेशन प्रोग्राम करते हैं, ठीक है, सबसे पहले आप लोगों में से मेरे ख्याल में 10% लोग भी बच्चे अभी तक कोई मेडिटेट नहीं कर रहे होंगे. 10%. जितने लोगों ने हैंड रेज किए थे, अप्रोक्सीमेटली 10% स्ट्रेंथ है जो मेडिटेट कर रही है, और वो एक स्टैंडर्ड मेडिटेशन कर रही है जो सीखा हुआ है किसी से, ऐसे कुछ. इजंट इट? यस और नो? इस प्रोग्राम का बेनिफिट क्या है? एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, दिस प्रोग्राम, रिसर्च, जितनी रिसर्च हो चुकी है, रिसर्च उस प्रोग्राम पे होती है. दिस प्रोग्राम गिव अस अ वैल्यू, ठीक है? रिसर्च इन द सेंस इट्स डन विद द 800 रिसर्च. इस प्रोग्राम पे जो हुई है 800 रिसर्च हुई है ऑल अक्रॉस वर्ल्ड में, नॉट इन इंडिया आई एम टॉकिंग अबाउट. ऑलरेडी कई यूनिवर्सिटी में, 200 यूनिवर्सिटीज में सक्सेसफुली ये प्रोग्राम चल रहा है, जहां पर वो बच्चे इसे फॉलो कर रहे हैं. अब उसे फॉलो करने के बाद, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था, फॉर एग्जांपल जाह्नवी इज वेरी कूल, वेरी काम, लेकिन सम टाइम एग्जाम टाइम में क्या होता है, आपको एंग्जाइटी होती है. एंग्जाइटी समझ आती है सबको? क्या होता है एंग्जाइटी? घबराहट, एकदम कॉन्शियस होना. जब भी आपके एग्जाम्स होते हैं, क्या वो पीरियोडिक्स हो गए, क्या आपके एनुअल एग्जाम हो गए, क्या आपके क्वार्टर एग्जाम्स होते हैं ना, एग्जाम सेंटर में आने से पहले आपको एंग्जाइटी रहती है. एंग्जाइटी के सिस्टम क्या प्रेडिक्शंस क्या है? यूजुअली या तो स्वेटिंग्स होती है हाथ में, ठीक है, या स्टमक में ऐसा लगता है बटरफ्लाईज उड़ रही हैं, ठीक है? दैट इज वेरी कॉमन इनफ. अब उस चीज को सेटल डाउन करने के लिए यू डोंट हैव एनी टेक्निक्स. डिड यू हैव? यस और नो? आप लोग उसी घबराहट में वो एग्जाम देते हैं, उसी घबराहट में आप लोग आगे एग्जाम देने चले जाते हैं. तो उसका रिजल्ट क्या आता है बेटा? ध्यान से सुनना एक बार. उसका रिजल्ट क्या होता है कि आपका आउटकम, आपके नंबर्स जो होते हैं वो कई बार मॉडरेट हो जाते हैं. मे बी यू विल बी गेटिंग ऑल द थिंग्स, आप सारा पढ़ के गए हैं, मतलब जाते हुए एग्जाम सेंटर में जाते जाते तक यू विल बी रीडिंग योर बुक्स, बट सम टाइम यू फॉरगेट, और बाद में आने से पता चलता है मैंने 4 क्वेश्चन छोड़ दिए. एक क्वेश्चन का अप्रोक्सीमेटली 500 वर्ड्स का आंसर लिखना था, बट मैं 100 ही लिख के आई. व्हाई? आई फॉरगेट.
सिंपल आंसर इज दैट आई फॉरगेट। अब उसका सोल्यूशन हमारे पास है। थ्रू दिस मेडिटेशन योर कंसंट्रेशन लेवल, स्पेसिफिकली फॉर द किड्स, योर कंसंट्रेशन लेवल हैज टू बी कम ऑन टू अप टू मार्क। लाइक अभी जो कंसंट्रेशन लेवल होता है यूजुअली हमारा किस पे होता है? फेसबुक पे हो गया, इंस्टा पे हो गया, ठीक है, सम अदर टेक्निक व्हाट्सएप पे हो गया, या रील्स बनाने पे हो गया। होता है ना? होता है, यस और नो? तो इस चीज की एडिक्शन से भी हम लोग को दूर जाना है, ठीक है। अगर आप ये एडिक्शन छोड़ते हैं तो आपका कंसंट्रेशन लेवल बेटा बढ़ जाता है, आपकी अडेप्टिंग पावर और ग्रैपिंग पावर जो आपके एकेडमिक्स को फुल फ्लेजर करती है, मार्क्स बढ़ाती है, वो चीजें आपको हेल्पफुल देंगी इस मेडिटेशन प्रोग्राम से, ठीक है। तो आई थिंक आई एम क्लियर फॉर योर क्वेश्चन। और किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है? श्योर। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड सी यू टुमारो विद योर 100% स्ट्रेंथ। और मैं बार बार कह रहा हूं, नो नीड टू बी वरीड अबाउट इट। टुमारो वी विल बी सिटिंग इनटू दी कवर्ड शेड्स विद फैंस, विद सिटिंग ऑन टू चेयर्स, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, थैंक्स अ लॉट।